Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis ji, and all the senior leaders from the government of Maharashtra. Namaskar, Jai Hind. It is an extreme honor and a moment of pride for me and for RIL as we embark on this remarkable MOU with the government of Maharashtra. RIL has always been deeply committed to the idea of New India under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji. As the largest business group in India, we are spread across the country, furthering our commitment to build a great nation. In this regard, our 3,05,000 crore MOU spread across new energy, retail, hospitality, green power, high-tech manufacturing is the step in that direction. We are inspired by the phenomenal leadership of Shri Devendra Fadnavis ji, whom I have known personally for over 10 years. His vision to make Maharashtra the gateway to India's $5 trillion goal is remarkable, and his pursuit of turning Maharashtra into the first $1 trillion economy is practical and doable in the next few years. I was part of Maharashtra's Economic Advisory Council, and I was impressed by the planning process that the government undertook to work towards achieving this target. Here is my company's commitment in that direction. I speak on behalf of our Honorable Chairman, Shri Mukesh Bhai Ambani, and the entire RIL group. We are with Maharashtra on this pursuit. Jai Hind, Jai Maharashtra, Namaskar. आज यहाँ डावोस में रिलायंस इंडस्ट्री ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री महाराष्ट्र में 3,05,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यह निवेश होगा, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिएस्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, रिटेल, डेटा सेंटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट, ऐसे वैरिड क्षेत्रों में ये इन्वेस्टमेंट होने वाली है। विशेष रूप से इसमें से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ये चूंकि सेवा क्षेत्र में जा रही है, तो इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर इससे नौकरियों का सृजन होगा, जॉब्स का क्रिएशन होगा, और करीब करीब 3 लाख जॉब्स का क्रिएशन ये इन्वेस्टमेंट करेगी, ऐसा एक प्राथमिक अनुमान है। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से हमारे साथ जिन्होंने इस एमओयू को साइन किया है, ऐसे श्री अनंत अंबानी जी, इनका भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ।